इंडिविजुअल एंड की तरफ से पेश किए गए तामीरी सहाफ़त के हवाले से 5 किस्तों पर मुहित पॉडकास्ट सीरीज़ के किस्त नंबर 3 में आपका खुशामदीद, जिसका मौजू है सोल्यूशन जर्नलिज्म एंड कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म, यानी कि महलूल सहाफ़त और तामीरी सहाफ़त का आपस में क्या रिश्ता है और किस तरह से ये आपस में मुवासलत रखते हैं। हमने माहिर से पूछा, Is it like journalism's solution to combat the news fatigue that we've been seeing for a couple of years? I view solutions journalism as one way to practice constructive journalism, and constructive journalism is more of the umbrella term. For example, solutions journalism is when we report on how people are responding to problems. So it's kind of a first instinct for a journalist, at least in the US, to write a story about a problem, about a conflict. We are taught in journalism 101 that, a problem makes something newsworthy. And so constructive journalism or solutions journalism would be, let's move past that and look forward to one more step. What are people doing about the problem? What are people doing to try to help resolve this problem? And then focusing the story on that rather than just focusing on the problem and stopping there. And so that type of narrative, there's some evidence that that's more engaging and makes audiences feel more hopeful, because right now the problem is that people are disconnecting with the news because it's making them feel hopeless. You mentioned are the reasons for constructive journalism to, combat this news disengagement. Yes, and to combat the negativity bias in the news. जी हाँ, तो सोल्यूशन ओरिएंटेड रिपोर्टिंग कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म यानी कि तामीरी सहाफ़त का पहला सुतून है, पर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप मस्बत रिपोर्टिंग करें। महलूल सहाफ़त के 4 मुहर्रिकात हैं, जिनमें सबसे पहले आपने शामिल करना है कि किसी भी मसले के हल के लिए कौन क्या कोशिश कर रहा है और कितना कोशिश कर रहा है, क्या वो मसला हल होने की तरफ है भी या नहीं, किन मरहल में मसले की हल की कोशिशें जारी हैं। नंबर 2 है कि उस मसले को हल करने के लिए जो कोशिशें और काविशें की जा रही हैं वो किस तरह से फ़ायदेमंद होंगी। इस हवाले से कोई भी अगर डेटा हो वो आप उसमें शामिल करें। याद रहे कि अगर इस हवाले से कोई डेटा मौजूद नहीं तो बराए मेहरबानी इस चीज़ को भी उस रिपोर्ट का हिस्सा बनाएं कि इस हवाले से कोई भी डेटा मौजूद नहीं है। उसकी जगह पे आप आम लोगों का वहाँ पे तासुर ले सकते हैं, उसको ज़रूर शामिल कर सकते हैं। नंबर 3 है इनसाइट्स और इन्फॉर्मेशन, कि वो काम करते हुए किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, किसने क्या सीखा, क्या मज़ीद बेहतर तरीके से हो सकता था या हो सकता है, क्या यही मॉडल कहीं और इसी मसले को हल करने के लिए अमल में लाया जा सकता है। और चौथी चीज़ को अंग्रेज़ी में लिमिटेशंस कहते हैं, जिससे मुराद है कि कोई भी हल पूरी दुनिया के लिए एक नहीं हो सकता, यानी कि जिस मसले को हल करने के लिए जो कोशिशें जारी हैं वो पूरी तरह उस मसले को पूरी दुनिया के लिए हल नहीं कर सकते। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ को भी उस रिपोर्ट में शामिल किया जाए कि किस तरह से वो हल सिर्फ एक मखसूस तबके के लिए या एक मखसूस इलाके के लिए हो सकता है, ना कि पूरी दुनिया के लिए। इन 4 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप तामीरी सहाफ़त के पहले सुतून को सर कर सकेंगे। दूसरे सुतून के बारे में हम जानेंगे अगली पॉडकास्ट में।